immense pleasure to have you all on board today. Thank you so much for taking out the time, and let's get your process started. So I know आप लोगों का first step है. There must be so many feelings, so much of nervousness, excitement in your heart and mind right now. But this is not an exam. ये कोई exam नहीं है. This is just an interaction, which is all about you, your first step, and what purpose you hold in life. So आज सिर्फ आप और आपके बारे में है. Nothing else matters here, and we have to make sure that we take every single step very, very seriously, because all of it counts for that matter. So yes, talking about the platform is not just about the crown. Forever Star India सिर्फ एक beauty pageant नहीं है. I know आप लोगों का final destination है to win the crown at the earliest, but this platform represents much more. It's a community that we have successfully built over the past few years, which empowers, encourages women who are like-minded, talented, and passionate. So nahi matter karta if you have any prior experience or not. It does not matter, you know, what background you hold on to. Only thing that is going to matter here today is how passionate you are, what purpose you are here with. So aaj ka audition process is going to be in 2 steps, but before that, let me just re-emphasize on the fact that is saal ka chehre, you know, is saal ke chehre aap log banne wale ho, you know, quite a few of you, because season 2021 was fortunately a huge success, where we created a world record of crowning 300 plus winners from across the country. 300 विनर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे पहली बार क्राउन किए गए, और इस साल हम एक नया रिकॉर्ड, नई हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, with most of you being a part of it. So about the audition process, let's get started. The first step is going to be your introduction. Please keep it very brief and crisp. जैसे ही आप अपने इंट्रोडक्शन में डाइग्रेस करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, it automatically disconnects you to the audience. So अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ और क्रिस्प रखिएगा. उसमें 2 चीजें आपको प्राइमरीली इंक्लूड करनी है. फर्स्ट, योर हॉबीज. सेकंड, व्हाई यू आर हियर, आप क्राउन क्यों जीतना चाहते हो. सो ये 2 चीजें आपको बिना पूछे अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करनी है. And lastly, we'll be winding up with your ramp walk by watching you walk 2 rounds, for the walk for that matter, and that is only to judge how much you know already and how much we need to work upon those technicalities. So now it's time for me, and it gives me immense pleasure to, invite the jury for today, the 2 leading ladies of Forever Star India. First, of course, is Ms. Kirti Choudhary, the director, who is going to be the guiding light and giving you snippet reviews about your performances. And second, we have Jaya Chouhan, who is also going to walk on the same path and make sure that the interaction is worth it. So I would request now Kirti ma'am to take over and ease out the mahal with her piece of wisdom with you all. Kirti ma'am, welcome on board. Over to you. Thank you so much, Herry, for inviting me, and thank you so much all of you for coming here for today's audition. First of all, congratulations that you've got this opportunity to prove yourself and get into this event as an official participant of Forever Miss India, Mrs. India, and Forever Miss Teen 2022. So you should be more excited than being nervous. Trust me. It is not going to be difficult when we say that we want to see you the most authentic version of you, right? So you do not need to pretend to be someone else. Whatever you are, just put it straight in front of us. Your introduction has to be extremely crisp. When you are talking about yourself, make sure you talk about your passion, you talk about your hobbies. और जो भी आप बोलते हैं वो बिल्कुल आपके दिल से निकल के आना चाहिए. अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप बेशक अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप हिंदी में बात कीजिए. एंड डू नॉट सीक आवर परमिशन फॉर दैट. हमसे परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं है. हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे सबको समझ में आती है, तो आप हिंदी में बात करेंगे तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा. थर्डली, जब आप रैंप वॉक करते हैं और आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा अपना फ्रेम सेट करने के लिए, तो वो फ्रेम आप इस तरीके से सेट करें दैट आई एंड द अदर जूरी मेंबर्स कैन सी यू कंप्लीटली फ्रॉम टॉप टिल योर टो. टॉप टू टो हमें कंप्लीटली आप दिखने चाहिए हो, अदरवाइज हम जज नहीं कर पाएंगे आपकी रैंप वॉक कैसी है. एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद ईच अदर, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज एज इन यहाँ पे मिस टीन के लिए भी ऑडिशंस हैं, मिस इंडिया के लिए भी हैं और मिसेस इंडिया के लिए भी हैं, राइट? तो आप अलग अलग सेगमेंट से हैं, अलग अलग एज ग्रुप से हैं. कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बनता है.
और अगर आप एक ही कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो भी हमारी एक यूनिकनेस है. All of us are unique human beings and we are here to embrace this uniqueness. We are going to judge you solely on the basis of your passion and how passionate you are about being here on this platform. So do not be nervous. Take a deep breath before your performance. All the best. I'm super excited to see what all of you have in store for us. Thank you. Thank you so much, Kirti ma'am. Thank you. Let's get to these lovely women. So let's start with Barsha. Hi, Barsha. How are you? Hi, ma'am. नमस्ते. नमस्ते. कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए. Ma'am, myself Barsha Priyadarshini Nandi, and I am from Bhadrak, Odisha, and my age is 19 years old, and my height is 5 feet 2 inch, and I am pursuing my graduation from FM University in Odisha in Zoology Honors, and my hobby is dancing and acting, reading books, story writing, like some script writing, drama script, some writing like this, and I'm interested in ramp work and modeling. Thank you, ma'am. आप कैसे हैं, ma'am? Alright, हम बहुत बढ़िया हैं. बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए. Thank you so much for sharing, Barsha. You can set your frame for the walk while I move to Tanisha. So this is how we are going to work it out. हम दो candidates के बीच में switch करेंगे. जैसे ही आप अपना introduction खत्म करते हैं, you can immediately work on to setting your frame. You. Hi, ma'am. I'm fine. How are you? I am too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Okay. Hello, everyone. A very good evening to all the respected judges. Namaste. I'm Tanisha Agrawal, a 19 years old girl, and I come from a very beautiful temple city, that is Suvarnapur. I currently pursuing my degree in BA Political Science. I love traveling. I'm a social person. I love to interact with people and make new friends. I was Miss Teen India Iron Girl 2021. I'm very dedicated. I focus towards my goals and bring a positive change into the world around us, but also a stepping stone to my dream, winning FSIA Miss India 2022. Thank you. Thank you so much, Tanisha. Thank you. And could you please re-emphasize on your hobbies as well? I love traveling. I love cooking, and sometimes I love anchoring. All right. Thank you so much. You can set your frame for the walk while I move back to Barsha for her ramp walk. Barsha, are we ready? अपने आप को unmute कर लीजिए. This is for everyone. Please make sure you unmute yourself before you start walking. Ma'am, can I visible clearly? जी आप visible हो, बस अपना mic on रखिए while you walk. Okay. And Tanisha, आप भी अपने walk के साथ simultaneously start कर सकते हो. Okay, ma'am. वर्षा आपका स्क्रीन ऑफ हो गया है. प्लीज स्टार्ट योर वीडियो. मैम 1 सेकंड मैम, मेरी सिस्टर थोड़ा ऐसे कैमरा थोड़ा फ्रेमवर्क 1 सेकंड 1 सेकंड. Ma'am, can I start?
Thank you. Thank you so much, Varsha. Thank you. And I would now switch to Tanisha. Tanisha, are we ready? Ma'am, 1 second, just 1 second. प्लीज अपने फ्रेम के सेटिंग्स थोड़े क्विक रखिएगा. जैसे ही फर्स्ट कैंडिडेट अपना वॉक कंप्लीट करता है, सेकंड कैंडिडेट इज सपोज टू स्टार्ट इमीडिएटली. Ma'am, can I start? Yes, please. तो मुझे दिस पर की धरती में तो Thank you so much, Tanisha. Thank you. I would request Kirti ma'am to take over and comment on Varsha and Tanisha's performance. Hi Varsha, how are you? I'm fine, ma'am. आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज सुन के मैं और भी ज्यादा अच्छी हो गई हूँ. You have a certain positivity to yourself. आप जिस तरीके से बात करते हो बिल्कुल पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो. आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड व्हेन यू स्टार्टेड विद नमस्ते आई जस्ट लव्ड इट. तो मुझे लगा था नमस्ते के बाद कि आप हिंदी में देने वाले हो इंट्रोडक्शन, बट देन यू कैरीड फॉरवर्ड इन इंग्लिश, व्हिच अगेन आई लव कि आपने बहुत ही अच्छे से वो ट्रांजिशन किया. आपका जो रैंप वॉक था वो एवरेज था. एवरेज मुझे सिर्फ इसलिए लगा कि कॉन्फिडेंट थे आप वॉक करने में, लेकिन जो आपका हैंड मूवमेंट था इट वाज अ लिटिल टू मच. हम हैंड मूवमेंट को थोड़ा सा सटल कर सकते हैं, उस कॉन्फिडेंस को वैसे ही इंटैक्ट रख सकते हैं एंड थोड़ा सा और आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं. उसके बाद you'll be good to go as an official participant. So just keep your fingers crossed and wait for your audition reports, Varsha. Thank you. Thank you, ma'am. Hi Tanisha, how are you? Hi ma'am, I'm fine. How's you? Even I'm doing great. ये जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है. आपने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो बहुत ही प्लेन लग रहा था आपका इंट्रोडक्शन, राइट? लेकिन अभी आपने काफी अच्छा टेल मी. वॉइस बहुत ज्यादा स्पीड है, so that's why. आपका वॉइस बहुत ज्यादा? मैं बहुत ज्यादा स्पीडली बोलती हूँ. यस, आप थोड़ा सा फास्ट बोलते हो. तो आपने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया था तनीषा. योर प्रेपरेशन वाज ऑन पॉइंट, बट व्हेन यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन यू हैव टू मेक श्योर दैट you need to take some pauses, some breaks, right? Those pauses are not supposed to be too long, just a few seconds maybe. जैसे ही अपने बारे में कुछ बेसिक बताया, just take a pause, फिर आप दूसरा उसका फेज स्टार्ट करते हो, फिर आप तीसरा पार्ट उसका स्टार्ट करते हो, so that you give some time to the audience to process that information. अगर आप सब कुछ एक ही गो में बोल दोगे तो हम समझ नहीं पाएंगे या फिर हम आधी चीजें भूल जाएंगे. But it was well prepared if I talk about the content, and your ramp walk was good. I'm actually loving it कि आप सब outdoors में आज कर रहे हो. वर्षा ने भी बाहर walk किया, तनीषा आपने भी बाहर किया. So again it was looking very nice. You I mean your dress is also looking lovely. So you are well prepared with respect to your introduction, with respect to your ramp walk. थोड़ा सा tweaking आपके ramp walk में हो सकता है, but that is for sure that you are capable enough of doing much better if trained appropriately. So all the best from my side. Thank you. Thank you so much, Tanisha. Thank you, Varsha. Let's move to Shirley Prince. Hi, Shirley. Hi. Hello.
I'm good. How are you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Yes, sure. Hello, everybody. My name is Shirley Prince, and I'm 20 years old. I'm currently a university student attending school in Canada, and I'm an international relations major. I'm from Chennai, Tamil Nadu, and I was raised in Seoul, South Korea. And my hobbies consist of painting, traveling, and various sports. I have a huge interest in beauty and fashion, and I wanted to participate in Forever Miss India to kick off my career in the field of modeling. Thank you. All right. Thank you so much, Shirley. I would request you to set your frame for the work while I move to Richie Gotham. Hi, Richie. कैसे हैं आप? Hi, ma'am. I'm good. How are you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have an introduction? Yes, sure. Hello, everyone. I'm Richie Gotham. I'm 27 years old, and by profession, I'm electrical engineer, and I'm also pursuing my master's. And my hobbies are traveling, doing yoga, and I love to play games. And my passion is studying too. And the reason I'm here because since childhood I had a dream to be a model, but somewhere I just lost this dream because of so many reasons. The one day when I was scrolling Instagram, then I just find this opportunity, and all the auditions and everything was online. So I just opted, and thank you so much for giving this opportunity. Thank you so much, Richie. You can set your frame for the work while I move back to Shirley. Shirley, are we ready? Yeah, sure. Yes, I'm ready. You can start. Thank you so much, Shirley. Thank you. Ruchi, आप भी start कर सकते हो. Thank you. Thank you, Ruchi. Thank you so much. I would request Jaya to take over and comment on your performance. Thank you, Herry. And hi, Shirley. Hello. How are you? I'm good. How are you? You look good, but why so low on energy? Because you want to start the journey in modeling and your energy was really low. I felt that. And same goes in the ramp walk part. Like your presentation part is good, your ramp walk was good, but the energy which, for the first step wasn't there. So I felt that, but I think you're more capable of doing better than this. So you have to take care of that once you receive your audition report card. So just wait for then. Thank you. I'd just like to apologize for the energy level. Nothing to be apologized. You can work on it later. Thank you. 4 a.m. for me in my time zone. So that's okay. And hi, Ruchi. Hi, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I am good too. You have a lot of energy, I say. Your presentation part is good. Ramp walk, I think we have a lot to improve because आपकी जो ramp walk थी, definitely उसमें technical part पे कुछ भी अभी तक आपने काम नहीं किया हुआ. You just worked, yes, I could see. And the introduction part also, I think इसको और constructed way में हम बात कर सकते हैं अपने बारे में. So for next time, make sure you add some unique points about you and then start the introduction.
So thank you so much. The performance was good for both of you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ruchi. Thank you, Shirley. Let's move to Sangeeta Paul. Hi, Sangeeta. How are you? Hello, I'm good. How are you, ma'am? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? So should I start my introduction? Yes, please do. Sangeeta, can you hear us? I am Sangeeta in cultural forms, which makes me classical singer, Rabindra Sangeet singer, and a Kathak dancer. Well, talking about my hobbies are playing guitar, listening to music, painting. Now, आपकी hobby की सुन पाई, not the last part. Why do you want to win the crown? Yes, ma'am. I want to set examples in the society through my art. I want to serve, inspire people to be confident, to be confident. I want to inspire people in many ways. So I need a platform, and I am also very passionate about modeling. So I think Forever Star Miss India is a great opportunity for me. All right. Thank you so much, Sangeeta. Thank you. You can set your frame for the walk while I move to Radhika Verma. Hi, Radhika. How are you? हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं भी अच्छी हूँ। ग्रेट, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कृष्णा मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिसने मुझे इतना सपोर्ट करा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जब मैंने ये इंस्टाग्राम पे पेज देखा तब मैंने उनके लिए उन पे फॉर्म भरा, तो मैम ने ये बोला कि हाइट कम है तो शायद आप, मैंने बोला मैम ट्राई कर सकती हूँ मैं, तो मैम ने बोला क्यों नहीं, आप कर सकती हो, इसमें हाइट वाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला थैंक यू मैम, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और मेरा नाम राधिका वर्मा है, मैं 19 इयर्स की हूँ, मेरा 12th कंप्लीट हो गया है, बीकॉम सेकेंड ईयर है। और ये क्राउन मैं इसीलिए जीतना चाहती हूँ क्योंकि हम 3 सिस्टर्स हैं, पापा मम्मी का कोई भी दूर दूर तक कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बोलते हैं लड़कियों को ये सब चीज नहीं करानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्टेज पे जाके ये चीज दिखा सकूं कि हर लड़की को अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी कुछ कर सकती है। थैंक यू मैम। बिल्कुल कर सकती है, आप बहुत ही प्यारे हो राधिका। आई लव हाउ यू थैंक यू मैम। टोल्ड दैट आपको अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू पता है। अब आप बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज डांसिंग, एक्टिंग, ट्रैवलिंग, बुक्स रीडिंग एक्सेट्रा। All right. Thank you so much. You can set your frame for the walk while I move to Sangeeta's walk. Sangeeta, are we ready? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. I'm ready. Yeah, start करिए. Your eyes, your love for me, be shy to control me. The vibe is really tonight. No, I'm not tired, but not the one. So I know what you want. The vibe is really tonight. No, I'm so lit, my girl. So let me say you roll it, my girl. You love it when you bend and roll it. Now let me roll it and let me own it, my girl. Thank you so much, Sangeeta. Thank you. Radhika, कर लीजिए and Radhika, you can start. मैम आप देख पा रहे हो? जी जी, आप विजिबल हो।
Thank you, Radhika. Thank you so much. I would request Kirti ma'am to take over and comment on your performances. Hi Sangeeta, hope you're doing well. आप unmute मत करना खुद को, वरना हमें अपने कान बंद करने पड़ेंगे. I hope आप मुझे सुन पा रहे हो. Give me a thumbs up if you can hear what I'm saying. Okay, I think now it's perfectly fine. There's no noise. So firstly, I just love your eye makeup. आपने अपने makeup and hairstyle पे जो थोड़ी सी मेहनत की है वो मुझे बहुत अच्छी लगी. But coming to your walk, had you been wearing stilettos and walking, I would have appreciated it more. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके फुटवेयर की वजह से आपकी रैंप वॉक अच्छी नहीं हो पाई. Right, the way you were posing, the way you were turning, it was good. लेकिन जब आप वॉक कर रहे थे तो वो बात आ ही नहीं पा रही थी because you are wearing flats, if I'm not wrong. No, it's not a flat, but it's a pump. 3-inch. It's a 3-inch pump shoe. Okay. So आगे से आपको ध्यान रखना है संगीता. You are only going to wear stilettos while you're doing your ramp walk, right? Okay. So you are capable of doing really, really well. All the best from my side. Thank you. And coming to Radhika, आपने जिस मासूमियत से अपना introduction दिया है, I was thoroughly impressed. Thank you, The way you were talking and the kind of clarity you have while you're talking. आपने एक बार भी fumble नहीं किया, आपने बिल्कुल clarity के साथ सारा कुछ बोला. So being a 19-year-old having that clarity, I appreciate that. And secondly, आपकी जो walk थी वो भी आपने बहुत मासूमियत से की because आपने I think कोई videos नहीं देखी YouTube पे. थोड़ा सा भी आपने कोशिश कर लिया होता वीडियोस देख के तो आपकी वॉक काफी अच्छी हो सकती थी. मैम एक्चुअली मैं थोड़ी प्रॉब्लम है तो घर पे प्रॉब्लम की वजह से मेरी जॉब चालू है तो उतना टाइम नहीं हो पाया था कि मैं दे पाऊँ. इस चक्कर में रात को आकर जॉब से ट्राई करती थी. कोई बात नहीं, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है अगर आपकी ऑडिशन रिपोर्ट कार्ड पॉजिटिव आती है और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो देन यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड. आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे. राइट? थैंक यू मैम. ओके, ऑल द बेस्ट. Thank you so much, Radhika. Thank you. And let's move to Deepika. Hi, Deepika. How are you? Deepika, can you please start your video and audio? Yeah. Yes, ma'am. Hi, ma'am. कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए. Yes, ma'am. Myself, Deepika Rajkumar Samundre. I'm basically from Nagpur. My age is 19 years old and height is 5'6", and I'm pursuing my BSc second year, and I currently doing also modeling. Thank you, ma'am. So Deepika, what do you want to? What is the final aspiration you have with respect to this platform? आप ये crown क्यों जीतना चाहते हो? I want to change on myself. कुछ न्यू करना चाहती हूँ मैम. All right, thank you so much for sharing. I would request you to set your frame for the walk while I move to Oppo Reno. Yes. Okay, ma'am. जिनका भी डिवाइस Oppo Reno 3 Pro है, प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जिन्होंने इसे नेक पीस पहना हुआ है. आप म्यूट पे हैं, हम आपको सुन नहीं पाएंगे. अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज. सॉरी जी, आपका नाम? हेलो, माय नेम इज सुनैना गौर. हाय सुनैना जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए. प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए. हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़ and I want to become a model because it's my dream to become a model, but
हुआ क्या कि मेरी शादी हो गई, इसलिए मैंने अपना फैशन में मतलब मॉडलिंग में आगे कुछ कर नहीं पाई, और आई हैव बेबीज एंड माय एज 25 एंड थैंक यू. All right. सुनैना जी, your hobbies. आपकी हॉबीज के बारे में भी कुछ मेंशन कर दीजिए प्लीज. My hobbies is dancing and cooking. Okay, thank you so much, and I would request you to set your frame for the work while I move back to Deepika. Deepika, Yes ma'am, sure. Start कर सकते हो. Done, ma'am. Yeah, thank you so much, and let's move to Sunana. Sunana, are you ready? सुनैना जी, अपनी वॉक के साथ स्टार्ट कर सकते हो. Thank you so much. I would request Jaya to take over and comment on your performances. Hi Sunana जी. हेलो. कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे लग भी रहे हैं. You look Thank very you so beautiful, and you know your presentation part is on point. But introduction में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें थी जो आप और अच्छे से describe कर सकते थे in a well way. So उस पे आगे आपको अभी काम करना है. And ramp walk में definitely आपको I think preparation तो पहले तो आपने किया नहीं है. This is your first ramp walk, right? I think there is a long way to go ahead, but I love your performance. Thank you. Thank you so much. And coming back to Deepika, how are you, Deepika? I am fine, ma'am. And you? I am good too. You look very pretty. And why are you nervous? First of all, you tell me. No, ma'am, I am not nervous. Because I could sense the nervousness. आप जब अपने बारे में बात कर रहे थे, you said you want to learn new things. तो वो उसको आपको describe करना चाहिए था. What are the new things? You know, existing. अभी आप शायद BSc कर रहे हैं, right? Yes, ma'am. BSc. Yes. उसके अलावा आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, you know, modeling and acting के करियर से? So that is something which you could have talked about. So for next time you have to take care of these things. बाकी ramp walk आपकी अभी I thought it is average. I think we can work a little more better on this. So we have a lot of groomers. Yeah, we have a lot of groomers who will be guiding you in this process. So in जिनका भी अब ramp walk बचा है, make sure you do it with a lot of energy, because this is the first time you're doing, and this is going to be there in the YouTube as well. So enjoy your time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Sunana. Thank you, Deepika ji. Please अपने आप को mute कर लीजिए. And let's move to Antara Shetty. Hi, Antara. How are you? I am fine, ma'am. And you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Yes, ma'am. Hello, everyone. My name is Antara Shetty. I live in Titwala and my age is 30. I study in 8th standard and my hobby is dancing, cooking and modeling. My height is 5.2. Thank you so much. And why do you want to win the crown, my love? मैम मुझे मॉडलिंग इसलिए करना है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे किए हैं मॉडलिंग के शो.
मुझे रनर अप भी आए हैं सेकंड प्राइज, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे और भी उससे बेटर करना है, इसलिए आई वांट टू बिगिन मॉडलिंग. Okay, makes sense. Thank you so much, Antara. You can set your frame for the work while I move to Ankita Tripathi. Hi, Ankita. How are you? Hello, ma'am. How are you? I am good. You tell me, how are you? I'm very fantastic. Let's start with my intro. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. I am Ankita Tripathi. I live in Varanasi, historical capital of India. And I had completed my master's with public administration and B.Ed. Also purchased 3 years of advanced diploma in French language. And I have been a radio jockey in Gyanwani, IGNU Gyanwani 105.6 FM. It is an educational channel. यहाँ पे मैम इसलिए हैं क्योंकि और एक कोई मतलब ये कह दो कि नहीं यही एक फील्ड में हम खुद को बांध लें या फिर एक डायमेंशन पे सिर्फ सोचें, ये सोचे नहीं है, मतलब खुद को एक्सप्लोर करना है और शाइन करना है. तो जब हम इंटर में थे तो उस समय काफी अच्छा फिजिक्स था मेरे पास. अभी तो मतलब बहुत सी चीजें फेस किए तो थोड़ा सा वो हो गया, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में. बट फिर से खुद को मतलब उस एज में तो नहीं ले जा सकते पर काफी कुछ सही कर सकते हैं, उसमें लगे हुए हैं. और हॉबीज हैं मेरी राइटिंग, जो कि कुछ मेरे जो आर्टिकल्स हैं, पोयम हैं, मतलब मैगजीन्स में और पेपर में पब्लिश हो चुके हैं. ट्रैवलिंग शौक है, सोना बहुत पसंद है, मतलब खुद की कंपनी एंजॉय करना बहुत पसंद है कि मतलब कोई ना हो और बस आराम करें. तो ये है मैम. थैंक यू. Thank you, Ankita ji. Thank you so much. You can set your frame for the work while I move back to Antara. Antara, are we ready? Yes, ma'am. Can I start? Didi, you can start. Ma'am, start. Thank you, ma'am. Thank you so much, Antara. I would request now Ankita ji to start. Ankita ji, are we ready? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Ankita ji. Thank you so much. I would request Jaya to take over and comment on your performance. Hi, Antara. Hello, ma'am. How are you? I am fine. You are fine. You Yes, look you? very fine. Your, the way I've said ki sabki ramp walk should have an energy. You had a lot of energy, I'd say. So your ramp walk was good, but I think technicalities definitely. आप बोल रहे हैं that you have done a lot of modeling अभी तक भी, and you're just 13, right? Yes, ma'am. Oh, you look very cute. And your presentation part, everything was on point. Just the maturity part, definitely, but it will come with the age, but in the career also. So there will be a lot of grooming which will be there to help you out. So thank you. Yes, ma'am. Thank you so much. Hi, Ankita. Hello, ma'am. How are you? I am good. You look very Also pretty. good, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. You too. You are so very attractive. Thank you so much. And let's start with your introduction, which was, I think,
बहुत सारी चीजें आपने कवर की एंड आई अंडरस्टैंड व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट, बट यू आर टेकिंग अ पॉजिटिव साइड. आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, दैट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव पर्सनालिटी. सो आई थिंक आप बहुत आगे जाने वाले हैं. यू हैव ऑलरेडी डन रेडियो जॉकी. सो आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग एंड जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है. जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट कॉन्फिडेंस अगेन. सो वो कॉन्फिडेंस आप अपना गेन कीजिए एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Ankita and Antara. Let's move to Vibhuti ji. Hi Vibhuti, how are you? Hi, I'm good. How are you? विभूति जी, आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपका आवाज बफर कर रहा है. Let's try again. I am doing good too. Can we please have your introduction? Am I audible? जी आप ऑडिबल हैं, बट आपका आवाज बफर हो रहा है. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ वीक नेटवर्क. कैन वी ट्राई अगेन? Yeah, just a second. Now I am audible, loud and clear. I think better है. Let's try this one. So आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हो. Yeah, good evening all the gorgeous ladies sharing screen today. I am Vibhuti. My age is 37 and I'm the wife of a army officer and mother of 2. I did my engineering in information technology. After that, I worked as a software engineer for 3 years. Later, after marriage, I had to quit my job because my husband was posted in a remote location. After 15 years of my marriage, I'm back and I'm pursuing MBA presently. And why I'm here is that I believe that age is just a number, and there is no what should I say? There should be never too late to live up your dreams. And my passion are dancing and playing badminton. All right. Thank you so much, Vibhuti ji. I would request you to set your frame for the walk while I move to Kavya. Hi, Kavya. How are you? आप म्यूट पे हैं. प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. यस मैम. कैसी हैं आप? हम अच्छे. आप कैसे मैम? बहुत बढ़िया. बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए. प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए. मैम, माय नेम इज काव्या. आई एम मैरिड. माय हॉबी इज मेहंदी डिजाइनिंग एंड डांसिंग और सिंगिंग. ओके. आप ये क्राउन क्यों जीतना चाहते हो? मैम, ये मेरे हस्बैंड का ड्रीम है. मैम, ये इस चीज के लिए मैम मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है. उनका यानी ऐसा कहना था कि यानी मैं करूं ये चीज, इसलिए और मैं करके दिखाऊं. और जो ये मेरी फैमिली वाले जो बोलते हैं ना मैम कि तुम्हारा रंग बहुत दबा हुआ है, तुम नहीं कर पाओगी ये सब चीजें, तुम्हारे बस की नहीं है, तो मैं करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड का नाम रोशन करना चाहती हूँ. All right. Thank you so much, Kavya. You can set your frame for the walk. I'll move back to Vibhuti ji. Okay. Are we ready? Yes. Okay. Yeah, start कर सकते हो. थैंक यू विभूति जी. थैंक यू. काव्या, आप स्टार्ट कर सकते हो. Thank you so much, Kavya. Thank you. I would request Jaya to take over and comment on your performances. Hi, Kavya. हेलो मैम. कैसे हैं आप?
मैं बहुत अच्छी मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आई बिलीव आप बहुत सारे लोगों का नाम रोशन करेंगे इन द फ्यूचर। डेफिनेटली बहुत ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग की आपको जरूरत है अभी के लिए। आई थिंक प्रिपरेशन की मुझे और कमी लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू हैव सेड दैट regarding the color key, your family say something about the color. So wait, everything is not in our control, right? So these are the natural aspects. We should accept it the way it is, and you can always work upon it. So I think you have a very positive personality. Just keep going. Thank you. Thank you. Hi Vibhuti. Hi Jaya ji. How are you? I'm good. You are spreading a lot of radiance. I'll say, when you were speaking about yourself, there was a lot of confidence in your voice. There was very present. Even the presentation, the introduction, and the ramp walk part, everything was on point. Just the ramp walk doesn't have the technical part, of course, but the way you have done it, it was very impressive. So I think I'll definitely see you in the training sessions. Thank you. Thank you so much, Jaya ji. Thank you. Thank you so much, Kavya and Vibhuti ji. Let's move to Shraddha. Hi, Shraddha. How are you? I am good. आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. Please अपने बारे में कुछ बताइए. मैम अपने बारे में क्या मुझे ना काम बिजनेस संभालने का बहुत शौक है और मैं अभी क्लिनिक में बैठी हूँ अपने. एक मैं सर्जरी करती हूँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट करती हूँ. मैं फेस के अलग अलग ट्रीटमेंट करती हूँ. मुझे बिजनेस करने का बहुत शौक है और मेरा नाम श्रद्धा अग्रवाल है. ओके. उसके अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं और आप क्राउन क्यों जीतना चाहते हो? मेरी हॉबीज है, माय हॉबीज इज आर्मी एंड पुलिस. और मेरे को क्राउन मेरी मम्मा के लिए जीतना है और मैं चाहती हूँ कि मुझे ना पहनाओ, मेरी मम्मी को पहनाओ क्राउन. स्टार्टिंग से ही मम्मी को मेरा सपोर्ट बहुत है. ये सब यहाँ तक पहुंची हूँ, मेरी मम्मी के कारण पहुंची हूँ. मेरे को वहां तक भी पहुंचना है मेरी मम्मी के लिए, बस मेरी माँ के लिए. ऑलराइट, थैंक यू. और मेरा एक डेक्सा क्लिनिक है, स्लिम एंड शाइन. इधर हर तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, फेस के, बॉडी के, हर तरीके के. और उसके लिए, अपने बिजनेस के लिए. ओके, सो कंप्लीट हो गया श्रद्धा. शुड आई मूव ऑन? ओके. आप अपना फ्रेम सेट कर लीजिए फॉर द वॉक व्हाइल आई मूव टू स्नेहल रोकाडे. स्नेहल, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्क्रीन? हेलो मैम. कैसी हैं स्नेहल जी आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए. मैं स्नेहल रोकड़े, मैं नागपुर से हूँ. एक मेरा पेन पकड़ लो. 10 साल हो गए मेरी शादी को. मुझे 2 बच्चे हैं और मेरी हॉबीज है उनके लिए अच्छी अच्छी कुकिंग करना और बुक्स पढ़ना. और मुझे ये क्राउन इसलिए जीतना है क्योंकि मेरा बचपन से ड्रीम था कि ऐसे यानी मॉडलिंग की इसमें जाओ, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब करना चाहती हूँ. All right, thank you so much स्नेहल जी. आप अपना फ्रेम सेट कर लीजिए for the walk. I'll move to Muskan till then, or I'll move back to Shraddha's walk for that matter. Shraddha, are we ready? अब स्टार्ट कर सकते हो श्रद्धा. वापस करके बताऊं कि बरोबर है? Thank you so much, and let's move to Snehal ji's walk. Snehal ji, are we ready? Yeah. Yep, start. बहुत सारे जो कोई रेडी होता है उसी को बोलते हैं. नहीं,
श्रद्धा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. Thank you, Snehaldi. Thank you so much. I request Jaya to take over and comment on your performance. Thank you. Hi, Snehal ji. हेलो मैम. कैसे हैं आप? एकदम ठीक. आप कैसे हो मैम? I am good too. Finally time मिल गया आपको अपना ड्रीम कंप्लीट करने का. You are free with the duties. अब आप अपने पे ध्यान दे सकते हैं. So I think काफी अच्छे से आपने अपने बारे में बात की और डिटेलिंग थोड़ी हम जान सकते थे. ये हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन है. जब पहले इंटरेक्शन में हम एक दूसरे के बारे में जानते थे बहुत डिटेल में, लाइक वी कांट स्पीक फॉर 5 मिनट्स, राइट? बट हम जो 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स के अंदर अपने बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद द ऑडियंस. सो उसके लिए आई थिंक यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रैंप वॉक में अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है. बट आई थिंक यू कैन डू बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू. सो थैंक यू. Thank you so much. And moving back to Shraddha. Hi, Shraddha. हेलो मैम. How are you? I am fine. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. First of all, there is something which I would like to advise you. Being a business woman, आपको अपने बारे में information I think बहुत सारी होगी. You could have given your introduction in a well mannered and detailed formation, I'll say. जैसे कि आपने स्टार्ट किया कि मैं क्या बोलूं अपने बारे में. आपका टाइम है. You have to speak about yourself, right? Business woman, आप किस टाइप का बिजनेस करती हैं, उसको what is your position there. इस तरीके से you could have said something about that. About your hobbies also. So I think मुझे preparation में बहुत कमी लगी and your ramp walk was also epic. So I think you have a lot to do in future. Thank you. Thank you so much, Shraddha and Snehal ji. And this is for everyone. You're not supposed to leave the meeting until the very end because the jury is constantly observing you. So we'll be talking about the platform in the end. So I'll move to Muskan Gazvier now. Muskan, hi, how are you? Hello, ma'am. अच्छे मैम. Fine. हेलो. अपने बारे में कुछ बताइए. मैम मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ इंजीनियर की. मेरा नाम मुस्कान है, निकनेम, और रियल नेम समीक्षा है. और मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ फर्स्ट ईयर से. और आई हैव 2 सिबलिंग. और मेरी हॉबी डांसिंग है और मेरे को पेंटिंग करना बहुत पसंद है. एंड आपके क्राउन क्यों जीतना? मैम एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे पेज देखी, उसके बाद मैंने अप्लाई की. उसके बाद मेरे को मैम वगैरह का आया कि आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे. फिर मैंने पे की, मम्मी को बताई, पापा को बताई. इतने खुश थे ना वो लोग, इतने खुश थे, पूरे घर भर में ढिंढोरा पीट दिए कि मेरी बेटी का ये सब हुआ है. मतलब एक्चुअली मेरे को मुझको बोलते हैं घर में, मेरी बुआ से लेके चाची चाचा कॉल कर करके बताने लग गए. पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया. और फिर मेरी सिस्टर कुछ उसके फ्रेंड्स को बताने लगी, छोटी सी है, और मेरा भाई है 8 साल का. फिर बोले वो दीदी का कैसा क्या हो गया बोले. फिर मैंने उसको बताई. अभी तक एक्साइटेड है वो लोग कि मैंने बताया आज मेरा ऑडिशन है. बट मम्मी बोला मेरे को ट्रेन से आना भी है बोला. एक्चुअली मैं रेलवे स्टेशन में हूँ अभी. फिर उसके बाद मेरे को बोले, मैंने बोला कैसे होगा मेरा ऑडिशन. अभी 5 बजे की मेरी ट्रेन भी थी, जल्दी हो गई थी. फिर मैंने बोला कि ऑडिशन नहीं दूंगी तो मम्मी का पूरा ड्रीम टूट जाएगा. और मम्मी बहुत कुछ करती है मेरे लिए. एटलीस्ट उनकी स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. तो एक्चुअली इस स्माइल के लिए वो कुछ भी कर सकती हूँ मैं. हेलो. यस मैम. जी श्रद्धा. एक्चुअली मेरी एक सर्जरी है तो मैं लीव कर सकती हूँ. आप अपने आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, बट ट्राई, बिकॉज हम एंड में प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे.
Okay. एक्चुअली मैं इधर ही है, देखिए मैं क्लिनिक में बैठी हूँ, इधर मेरी No सर्जरी है। problem, श्रद्धा. You can leave the meeting. अगर अभी आपकी सर्जरी है तो आप मीटिंग से जा सकते हो. सारी इंफॉर्मेशन और लिंक्स आपके साथ बाद में शेयर कर दिए जाएंगे. थैंक यू सो मच. Thank you. And let's move to मुस्कान. क्या आप वॉक कर पाओगे? आप म्यूट पे हैं. Yes, ma'am. अपना फ्रेम सेट कर लीजिए if you can possibly. And I'll move to Priya till then. Hi Priya, how are you? Yes. Priya, can you please start your video and audio? Hi, how are you? I'm good. And you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? My name is Priya. I'm from Kolkata. मेरा ये हॉबी है एक्टिंग और ड्राइंग एंड डांसिंग, और मेरा पैशन है मॉडलिंग और एक्टिंग, और प्रोफेशनल भी मैं मॉडल हूँ. और मुझे यहाँ क्राउन इसलिए जीतना है क्योंकि मेरा ड्रीम है अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना, और मुझे बहुत पसंद है. All right. Thank you so much for sharing. And you can set your frame for the walk while I move back to Muskan. Let's see if she can walk, give us 2 rounds. Okay. बैक कैमरा कैसे लगाना है? एक मिनट. वहीं से यहाँ से क्या? नहीं आया, नहीं आया यार. Let's move to the walk. Ready? प्रिया, आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए.
Okay, thank you so much, Priya. I would request Kirti ma'am to take over and comment on your performances. Hi Muskan, how are you? You have to unmute yourself. आपकी आवाज नहीं आ रही है. फाइन मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. और आपका ये जो आप मूवमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, बिकॉज आपके इंट्रोडक्शन में बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, और आप जब रैंप वॉक कर रहे थे तब भी कैमरा स्टेबल नहीं था. एनी विच वेज, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो मुझे बहुत ही कैजुअल लगा. You know, when I say that you are auditioning for Forever Miss and Forever Mrs. India, so it is a huge platform. तो आप बिना किसी preparation के and randomly कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. You have to make sure that whatever you are saying makes sense to us, right? आप audition दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं, आपका passion क्या है, और आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के, इस कम्युनिटी पे आके. That's what we are here to listen. इसके अलावा अगर आप irrelevant information अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करते हैं तो वो आपके इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग नहीं बनाता, राइट? तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से और बेटर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में. यू नो, गो थ्रू सम वीडियोस ऑफ पीपल गिविंग देयर इंट्रोडक्शन. और आपका रैंप वॉक भी अभी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है मुस्कान. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. एंड now, so who was the second candidate, Herry? Priya. Hi, Priya. I cannot see you. Yes, hi, Priya. So how are you doing? मैम गुड. Okay, तो क्या हुआ, आपने इंट्रोडक्शन की प्रेपरेशन नहीं की थी? नहीं मैम, किया था. वो एक्चुअली थोड़ा सा नर्वस हो गई थी. Okay, नर्वस नहीं होना है, because you look so pretty, your hair is looking lovely. लेकिन जब आपने इंट्रोडक्शन दिया तो आपने शुरू होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया, right? Which directly showed that you were not prepared. आपके पास कुछ था ही नहीं बोलने को, आपने बस बेसिक 2-3 चीजें बोली and then you just completed your introduction. So let me just tell you that when you are giving your introduction, you are talking about your own story. आप अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में बात करते हो, so you have to talk about it in an interesting way so that the other person listens to it. वो कब होगा, जब आप उसका कंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे. So from next time, whenever you're giving your introduction, you should be more prepared. जब आपकी प्रेपरेशन ऑन पॉइंट होगी तो आपकी जो नर्वसनेस है वो अपने आप कम हो जाएगी, right? So I would be looking forward to a better constructed introduction next time if you're here on the platform. All the best. Thank you, ma'am. Thank you, Priya. Thank you so much. Let's move to, our next candidate, DC5V. Can you please unmute yourself and अपना नाम बता सकते हो? हेलो मैम. हेलो, प्लीज अपना नाम बता दीजिए. मैम मेरा नाम, आई कैन स्पीक टू हिंदी मैम? जी जी बिल्कुल. नमस्ते मैम. एंड मैं हरियाणा से हूँ मैम. मेरा नाम वैसे मैम शिल्लू है, लेकिन मेरे को निकनेम मेरा निक्कू है मैम. और मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ मैम. ओके, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए. मैम मेरी मतलब हॉबीज तो मतलब मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ मैम. जैसे कि पेंटिंग हो गया, और देखो मैंने खुद भी पेंटिंग बना के रूम में लगाई हुई है, और मॉडलिंग के वो भी हैं. और जैसे मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की मैम. मतलब मैं ये सोच रही थी कि भाई अगर मैं क्यों प्रिपरेशन करूँ, भाई मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो मतलब उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है. लेकिन मैंने रैंपिंग की मैम प्रिपरेशन वगैरह. और हॉबीज में मैं मतलब हर एक चीज में एक्सपर्ट हूँ. वैसे फेस एक्सपीरियंस वगैरह, मेरे को डांसिंग में इंटरेस्टेड है. मैं बॉय लुक करती हूँ डांसिंग में. जैसे मेरी 3rd पोजीशन भी आई थी फर्स्ट बार में. मैंने वहाँ पे बिना प्रैक्टिस के डांस किया था, उसमें भी मेरा नंबर हो चुका था. हर चीज की हॉबीज है मैम. जैसे कुकीज भी कर लेती हूँ, पेंटिंग वगैरह. और पहले मैं कबड्डी प्लेयर भी थी. तो मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैम. तो मतलब होता है मेरा सिलेक्शन हर जगह होता है, लेकिन वहाँ पे मैं पैसे की वजह से रह जाती हूँ. All right. Thank you so much. आप ये क्राउन क्यों जीतना चाहते हो? क्राउन के लिए मैम मेरी बचपन की स्टोरी से है मैम. मैं जब छोटी थी ना, तो बचपन में एक ताश था. जब वो
थोड़े बहुत पैसे का आता था, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलाया मेरे को, छोटी सी थी जब मैं। और मेरे चाचू, मैं उसको देख के मतलब इतना रोई बहुत ज्यादा। फिर मतलब उसके बाद भी चलो कुछ नहीं, मैं भूल गया। फिर 9th क्लास में हुई मैं। 9th क्लास में हमारे स्कूल में जैसे एक मॉडल को लेके आए थे, उस टाइम पे बचपन की बात तो मैं भूल चुकी थी, जो कुछ भी था कुछ नहीं, चलो कोई नहीं। फिर अभी तक भी वो ताज मेरे को मतलब नसीब नहीं हुआ मैम। तो एक मॉडल आई थी हमारे स्कूल में, तो फिर मैं उनकी मतलब नकल उतार रही थी, उन्होंने मेरे को देखा, कह रहे मतलब आप कर सकते हो बच्चा ये है। और फिर मैंने उनको देखा ना, मतलब उनको देख के मैम मैंने उनके सर पे वही ताज देखा जब मेरे को बचपन याद आ गया मेरा। फिर मैं मतलब पागलों की तरह हो गई, हाँ भाई मेरे को करना है। All right, thank you so much, Shilu. आप अपना frame set कर लीजिए for the ramp walk. I'll move to Chandrama. Hi, Chandrama. जी मैम। चंद्रमा प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Okay, I think there is some network issue from Chandrama's end. Let's move to Sanya. Hello. Hello. Hi, Sanya. How are you? I'm good. How are you, ma'am? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Sure. Hello, myself Sanya Khan Siddiqui. I am 25 years old from Chandrapur, Maharashtra. I am a mom, student, model, and a wife. Modeling has been the part of my life from last 6 years. I won some titles in Miss category, and I'm here to make it on for Mrs. today. Talking about my interest, I like to listen shairis, mushairas. I love doing gymming. I love doing photo shoots. I like to go to jungle and explore the nature. This is all about my interest. I'm here in Forever Star with a perspective that modeling has given me in my life. Having gratitude, confidence, being out there, being myself. Forever Star is an opportunity to win the more titles on my shoulder and Mrs. category. Right now, all I'm manifesting for. Thank you. Thank you so much, Sanya. Thank you. And I would request you to set your frame for the work while I'm moving to Shivu. Shivu, are you ready? मैम एक बार सॉन्ग वो कर रहे हैं। Okay. Hello, ma'am.
Thank you, Shilu. अपने आप को mute कर लीजिए. I'll move to Sanya's ramp walk. Sanya, are we ready? I'm ready. Shall I start? जी जी. Thank you, ma'am. Thank you, Sanya. Thank you so much. I would request Kirti ma'am to take over and comment on your performance. Hi, Shilu. How are you? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. कैसा लग रहा है अपना इंट्रोडक्शन देके और वॉक करके? मैम वैसे तो बहुत गुड फील हो रहा है, लेकिन मैंने जल्दी इंट्रोडक्शन देने के चक्कर में आधी चीज नहीं बता पाई, क्योंकि मैंने सुना था आपने बोला जो 30-30 सेकंड में पूरा करना है, उसी के लिए मैंने मेन चीज बता दी. ओके, मेरा पहला इंट्रोडक्शन है मैम ये, और मतलब मॉडलिंग के लिए भी मैंने फर्स्ट बार ही वो किया है मैम. ठीक है, तो अभी शीलू हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है. वो इसलिए क्योंकि प्रेपरेशन जो होती है वो इसलिए नहीं होती कि हम कुछ और बोलना चाहते हैं या हम ऑनेस्टी के साथ बात नहीं करते हैं. आपका ऑनेस्ट होना और प्रिपेयर्ड होना दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं. राइट, यू सेड इट इन द बिगिनिंग कि मुझे लगा मुझे प्रेपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है. सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. जब आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे या फॉर दैट मैटर आप कहीं भी होते हैं और आप जब अपने बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फॉर इंस्टेंस 100 थिंग्स आर गोइंग ऑन. 100 बातें 100 चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन वो 100 की 100 हमें बोलनी नहीं होती है. राइट, देयर हैज टू बी अ फिल्टर. हम एक फिल्टर लगाते हैं और उस 100 में से 10, 15 या 20 बातें ही बोलते हैं. But you kind of said anything and everything that came to your mind. So that is a big no. जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड होते, अगर आपने थोड़ी सी प्रेपरेशन की होती. प्रेपरेशन में क्या होता है, हमें पहले सोचना होता है, मंथन करना होता है कि ये मैं हूँ, ये चीजें मुझे डिफाइन करती हैं, ये मेरा पैशन है और इस वजह से मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ. फिर आप उसको अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर आप बात करते हैं. राइट, तब एक अलग तरीके का इंट्रोडक्शन निकल के आता है. और जब आप रैंडमली कुछ भी बोलते हैं वो एक अलग इंट्रोडक्शन होता है. सो नेक्स्ट टाइम wherever you're giving an introduction, preparation is a must. आपकी रैंप वॉक में आप कॉन्फिडेंट थे, बट टेक्निकली there's a good scope of improvement there. Thank you and all the best. थी बर्फ खाने की वजह से, तो मेरे गले में थोड़ी दिक्कत वगैरह हो गई मैम. और फिर वो मैम ने बोला ना कि जल्दी में देना है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा हड़बड़ा सी गई थी. और फर्स्ट है मैम, एंड आई होप कि मैं आगे बहुत अच्छी तैयारी करूंगी. कोई बात नहीं, आप बस अपनी ऑडिशन रिपोर्ट कार्ड का वेट कीजिए. थैंक यू. एंड हाय सान्या, हाउ आर यू? I'm good. How are you, ma'am? Yes, even I'm doing great. Thank you for asking. You're looking lovely in that dress. Your earrings are looking lovely. And the way you spoke about yourself, I just loved that because there's a certain calm to your personality. आपने बहुत ही आराम से अपने बारे में बात की. And towards the end when you said that I'm manifesting to be here on this platform, I just loved that part. I'm sure you're maintaining a gratitude journal also. You are practicing gratitude also. And trust me, this attitude of yours is going to take you a long way. But with respect to your ramp walk, there's something that I would like to add. आप ramp walk और ज़्यादा अच्छी कर सकते थे, but you were not very comfortable in the dress that you're wearing. आपकी dress comfortable नहीं थी, इसीलिए आप 100% नहीं कर पाए. So from next time, make sure whenever you are walking the ramp, you have to wear an appropriate dress according to your ramp walk. जिसमें कि आपके your legs have to be comfortable. There has to be some room for movement. Yes, but your overall, you're looking lovely. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Let's move to the screen user with iPhone. Please अपना camera और audio on कर लीजिए.
Hi, can you please tell me your name? Hello? जी, आपका नाम जान सकती हूँ, please? Sorry, you're not audible. Can you hear me now? Hi. All right, let's move to Chandrama. Hi, Chandrama, how are you? Let's try connecting now. Chandrama, I think आपका network बहुत ज़्यादा buffer कर रहा है, so you need to work on that. Otherwise, आप नहीं audible हो पाओगे. So I think the username iPhone is back. Could you please unmute yourself and start your video? Hi, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Hi, good evening. Good evening. Could you please tell me your name? My name is Nivya. Nivya. Hi, Nivya. How are you? I'm great. How are you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Yeah, sure. Hi, everyone. Good evening. My name is Nivya. I'm 22 years old and I'm from Chennai. My height is 5'9". I'm a basketball player and a table tennis player. So basically, I got into modeling a few months back because of my passion for it. I started basically from photo shoots, and then now I wanted to enter my pageant. And I would like to thank you all for the honor of having me here. All right. So is there anything more that you would like to add on to the fact of why do you want to win the crown? Yeah, I would like to use this platform actually to help educate the society, because there are a lot of topics which need to be spoken but which are not spoken. So if I win this crown, I would use that platform to help educate everyone, use that platform to, spread the word. There are a lot of things which need to be taught, and I would really love the platform and All right, makes sense. Thank you so much. You can set your frame for the walk, Nivya. I'll move to Chandrama if she connects now. Chandrama, can you hear me? Okay, I think her network is anyways going to buffer. Nivya, you can directly start with your walk. And Chandrama ji, in case you can hear me, please make sure कि आप better network के साथ connect करो, because आपका network के साथ introduction possible नहीं हो पाएगा. It's okay. You can get your audition rescheduled. Is Nivya setting her frame, Herry? Nivya, are we ready? Thank you, Nivya. Thank you so much. I would request Kirti ma'am to take over and comment on your performance. Hi, Nivya. How are you? You're on mute. I'm doing great. How are you? Yes, even I'm doing great. Thank you for asking. So I just love your name, Nivya. What does it mean? Because I know there's a brand also with this name, but what does it mean? It was actually my mom's favorite term, and like they used to call her that in her childhood. So she kept the same name for me. Oh my It's God. actually short for Nivedita, which means disciple of Swaminathan. Yeah. Nivedita. I'm sorry for my dog. I'm really no, sorry. It's perfectly fine. That's okay. So, Nivedita, yeah. Nivya,
your introduction, you sounded a little nervous to me while you were giving the introduction. You missed out on a few things, right? And Herry pointed out that, is there anything that you would like to add? You added. Yeah, so it was a solid point. You should have added it in the beginning only, like while you were talking about yourself. So you do not have to be nervous next time. You can be a little more prepared. You can make a few pointers that these are the important pointers that I need to cover. Right? Because nervousness में क्या होता है कि कभी-कभी हम preparation भी कर लेते हैं, but we are not able to speak in front of an audience. That's how it is. But otherwise, you look lovely. And of course, your ramp walk was also very confident, but I, again, found it a little on the nervous side because you were doing it ekdam jaldi se. Yeah. So were you in some hurry? So when we are nervous, we, do whatever we are supposed to do, and whenever we are performing, we just do it in a hurry. Ki bas jaldi se ho jaye yaar. Yeah. When we are nervous. Yeah. So you did well. Had you not been nervous, you could have done much, much better. Right? So you are capable of doing really, really well. Just keep your nervousness a little low and, get that excitement a little higher. All the best. Thank you so much. Thank you, Nivya. Thank you so much. And that brings us to the end. I would request everyone to start back their videos so that we can conclude on a very, very positive note. And of course, thank you so much, ladies, for bringing your best foot forward. Ye aapka pehla step tha. Now let's see where the platform takes you and how well you have performed. Ye aapko kal sham tak pata chal jayega with your audition report cards. And congratulations on completing your first step of leaving a mark that is so credential. Because I'm sure you're going to take away an experience where you talked about yourself. बहुत हिम्मत लगती है अपने बारे में strangers से बात करने के लिए. So you did that. Kudos to each one of you for that. And now let me just talk about the platform. I would request everyone to stay on mute. अपना mic mute कर दीजिए. Do not unmute yourself. Thank you. And अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में. जैसे आप लोगों ने हमें अपने बारे में बताया, it's high time that you understand what this platform is about. Because जब मैंने कहा कि ये एक ब्यूटी पैजेंट नहीं है, it's a community, I meant it literally. Why do I say that? So let me just, start my video where the entire team puts forward what your next journey is going to be like. Because I'm sure आपको जानना रहेगा कि इसके बाद होगा क्या. So I'm going to play my screen. Make sure you be, stay attentive and hear out the details. ये वीडियो आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, but it's good to hear it live while you're just alive of your auditions. Hello everyone, welcome to Forever Star India. I hope you guys are all doing good and congratulations on completing your level A with Forever Star India and taking your first step into the journey of becoming Forever Miss, Mrs. or Miss Teen India 2022. So आज आपका first step complete होते ही, you will be receiving your audition report cards at the earliest. These audition report cards are like e-certificates which will credit your performance officially signed by the jury members. Because I'm sure आप जब किसी भी चीज में अपनी मेहनत, अपना input डालते हैं, you deserve to know where you stand to start your journey accordingly or to improve upon your weak points. Not only that, this audition report card will hold a validity of lifetime, which means आपको दोबारा हमारे साथ यानी कि फॉरएवर स्टार इंडिया की टीम के साथ ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा, even if you change your categories in the coming times, because I'm sure you would want to improve upon your performances, or in case you discontinue due to any number of reasons, an audition won't be required in the coming seasons from your end. And first step Plena is always beneficial, so make sure you take that. Secondly, what happens after the audition? You become a lifetime member of the platform, an official participant of Forever Star India. Now that's just not a term that I'm using casually. An official participant of Forever Star India in any of the respective categories is a celebrity, because the benefits that you receive out of this platform are incredibly huge and credential. Let's talk about these benefits. First of all, you receive a lifetime membership of the platform. अब lifetime membership तो किसी भी project, किसी भी process की बहुत fascinating होती है.
Imagine receiving all the discounts, offers that you sign up for when you even sign up for a brand or a mall. लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म की लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलना which is full of opportunities and most importantly very safe and secure, because let's be honest, as women today we are very cautious of the fact what we are investing our time and energy into, because everything is digital, so we have to be careful. लेकिन जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हो which is a female oriented, believes in empowering women, and secondly very very safe, having only verified members from across the country, you will not think twice before accessing any of these opportunities. For instance, we have already launched the much awaited Forever Star India application. Now, this exclusive FSIA app is going to be a one-stop solution to all your queries and is going to ensure that आप multiple तरीके से अपनी प्रोफाइल को बूस्ट कर सके और अपनी इंडिविजुअलिटी की विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर पाए, because you will get to interact and showcase your talent, your skills to the entire nation on a single platform. Because I'm sure you would want to be noticed when you are putting your heart and soul into it. Imagine जब पूरी दुनिया आपको देख पाएगी performing your talent rounds, your auditions, and much, much more. Not just that, this app will enable a very strong networking with professionals from all over the world as well, because you will be able to access their expertise directly. Now let's come to the second most important benefit that no other community or pageant for that matter is offering or has offered. What is this benefit? आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, from so many women or even men for that matter you have met or you might meet, there is one common factor between all of you. आप सब में एक बहुत strong common wish है, चाह है, और वो चाह है अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने की, अपनी पहचान बनाने की. लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे काम से जाने. What if I tell you कि ये जो बेनिफिट है, ये जो आपकी विश है, ये हम पार्टिसिपेशन लेवल पे बिना आपके विनर बने ही पूरी कर देते हैं. Not just going to talk about you, but rather show the entire thing to you. क्या आपने कभी अपना नाम गूगल किया है? हम यूजुअली नहीं करते बिकॉज हमें लगता है अभी हमें उस लेवल तक पहुंचने में टाइम है. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट जैसे ही आपका पार्टिसिपेशन प्रोसेस क्लियर होता है तो हमारी टीम आपकी प्रोफाइल को इस तरह बूस्ट करेगी कि कोई भी आपका नाम गूगल पे सर्च करेगा तो आपकी FSIA प्रोफाइल टॉप पे शो होगी. यस, लुक एट द स्क्रीन. हम अंकिता शेट्टी का नाम सर्च कर रहे हैं, who was the national winner of Forever Star India Mrs. India 2021 category 1. बहुत important है ये प्रोफाइल आपके लिए, बिकॉज इसमें सिर्फ आपकी पिक्चर्स नहीं, आपकी अचीवमेंट्स, आपका टैलेंट, आपकी इंडिविजुअलिटी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हाईलाइट की जा सकती हैं. एंड दैट्स अप टू यू हाउ यू रिप्रेजेंट योर प्रोफाइल. एंड माइंड यू, ये बेनिफिट सिर्फ विनर्स के लिए नहीं है, पार्टिसिपेंट लेवल पे हर पार्टिसिपेंट को ये बेनिफिट मिलता है. So make sure you get going and find your name on the Google top ranking. We are searching 2 more candidates, Dimpi Jain, Naomi Ribeiro. And look at the results. So that's the kind of visibility and unique identity that Forever Star India provides you once you clear your participation process. I am sure आखिर किसे नहीं बोलना है, गूगल कर लो मेरा नाम और मेरा काम दिख जाएगा. Now that's one fascinating benefit that you receive out of this platform, no matter if you win or not. तो आपकी जर्नी आप बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करते हो, because our team starts working on these technicalities as soon as you clear your participation process. And now moving forward, another important benefit is कि आपका e-certificate digitally release कर दिया जाता है
Moreover, a hard copy of a beautifully gold embossed certificate is sent to your doorstep. एक एक्चुअल सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन सैश आपके घर पहुंचाया जाता है at the earliest, which has a beautiful picture of yours and your name embossed onto gold. Not just that, आपकी सोशल मीडिया विजिबिलिटी पे भी हमारी टीम बहुत माइन्यूटली काम करती है, because there are social media promotions involved through all our digital platforms, where each of you individually is given due mileage and highlight according to the efforts you put into the platform. Now, there has been a lot of discussion about the benefits. But what about the journey? आखिर ये सफर होगा कैसे? आप क्या सीखोगे? What's the plan that Forever Star India has for you in terms of your competition, your trainings? Let's hear it directly from the director of Forever Star India, Ms. Kirti Choudhary. Now that you've listened to all the benefits that this platform has to offer, let me just tell you that these benefits are not going to come so easy. There's a certain process that we are going to follow here. You will have to be there for this process. You will have to appear for these training and grooming sessions. तो अगर ट्रेनिंग और ग्रूमिंग सेशंस की मैं बात करूं, जैसे ही आपका पार्टिसिपेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और टीम टेक्निकली आपकी प्रोफाइल को टॉप पे लाने में जुट जाती है, तो इस तरफ हमारी जो ट्रेनर्स की टीम है, जिसमें इमेज कंसल्टेंट्स हैं, रैंप वॉक एक्सपर्ट्स हैं, पैजेंट ग्रूमर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, मेकअप कंसल्टेंट्स भी होंगे. ये टीम ऑफ ट्रेनर्स, they are actually going to help you in becoming the best version of yourself. And how are we going to do that? You will be appearing for these training sessions for the coming 3 to 4 months online. यानी कि आप हमारी एप्लीकेशन पे आपकी प्रोफाइल के थ्रू लॉगिन करेंगे और इसी एप्लीकेशन पे आपके ये ट्रेनिंग सेशंस होंगे. So once or twice a week, you will have to be available for these training sessions. Gradually, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि बहुत से लोग आप में से हैं जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, इस इंडस्ट्री से नहीं है. So these trainers will make sure that they will help you in understanding those areas of your personality which need to be worked upon. जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी, फॉर इंस्टेंस एक इमेज कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा कि आपको अपनी वर्चुअल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कैसे बनानी है. साथ ही में आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो, एक जज्बे के साथ आप अपने पैशन को अचीव कैसे कर सकते हो. उसके बाद आपके टैलेंट राउंड स्टार्ट होंगे, यानी कि इधर आपकी ट्रेनिंग चल रही है और साइड बाय साइड आपके टैलेंट राउंड्स स्टार्ट हो जाएंगे. 3 टैलेंट राउंड्स होंगे, यानी कि 3 चांसेस यू विल बी गेटिंग टू प्रूव योरसेल्व्स. इन तीनों चांसेस के बाद आपका जो स्कोर होगा, उस स्कोर के बेसिस पे वी विल बी शॉर्टलिस्टिंग सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स. नाउ डू नॉट वरी, you will not have to ask anyone कि मेरा स्कोर क्या है, मेरा स्कोर इतना कम क्यों है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है. You will directly be going to your profile on our application, and from there you can directly have access to your score in each of these talent rounds. Gradually हम सिटी रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे. सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स में से हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स शॉर्टलिस्ट करेंगे. अगर आप जयपुर से हैं, फॉरएवर मिस इंडिया जयपुर. अगर आप मुंबई से हैं, Forever Mrs. India Mumbai 2022. इस जर्नी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद की पर्सनालिटी में कितना इंप्रूवमेंट देखते हैं. We are not going to compare you with each other at any point here on this platform. We are going to compare you with the progress that you are making with respect to your own self. So make sure you are learning, you're noting everything down, and also you are improving every passing day. I understand 90% of the process that we follow is virtual, but do not worry कि आप सिर्फ अपने घर पे बैठे बैठे ही क्या फिनाले या जो आपकी क्राउनिंग है वो करवा लेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. आपकी ट्रेनिंग सेशंस, आपके ग्रूमिंग सेशंस और आपके टैलेंट राउंड्स, उसके बाद जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग है, सिर्फ यहीं तक आपका प्रोसेस वर्चुअल है. लेकिन जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इवन इफ एट सिटी लेवल यू आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, one thing is for sure, that you are coming for the finale to one of the most beautiful cities of India, which I call the Pink City, Jaipur.
फिनाले जयपुर में होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड सिटी लेवल पे भी शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप फिनाले के लिए जयपुर आएंगे. So we will make sure that you get that experience here of a winner of becoming a celebrity of Forever Star India. Trust me, that feeling is going to be an altogether different feeling. You are going to be a part of a magnificent event where you're walking down the ramp wearing that beautiful couture gown designed by our fashion designers. A makeup artist is going to doll you up for this event, and you will finally be meeting your team of trainers and groomers जो finally आपको train करने वाले हैं कि आपको stage पे walk कैसे करना है, आपको अपना interview कैसे देना है, and how are you going to be there in front of the world, in front of the media as a celebrity. All the best to each one of you who has successfully cleared their audition. And now you are ready to become an official participant of Forever Miss Teen, Forever Miss India, and Forever Mrs. India 2022. So let me remind all of you that the training sessions have already started. But if you complete your participation process at the earliest, your account manager will add you to a fresh batch and we will be starting with your training sessions. All the best. Thank you so much. All right, ladies, that was Team Forever Star India talking about the platform. I'm sharing Forever Star India's social media details into the chat box. आप screenshot ले सकते हो या simply copy paste कर सकते हो. You will find so many details about the last season and the upcoming one that it's going to be a fun watch to witness. So thank you so much for your time today. It was a great interaction. Looking forward to see most of you in the training sessions. Wait for your audition report cards. कल शाम तक आपके पास WhatsApp के through digitally पहुंचा दिए जाएंगे, and we're looking forward to see you all, positively really soon. Thank you. Have a great evening and goodbye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.